Good morning, good morning, good morning, students. In last session, we have completed with the accounting standard 13 investment in equity shares, and today we are going to start with investment in debentures, and we are going to solve some illustrations which are left for accounting standard 10 at after break. Okay. Students, I don't think you have any doubts in investment in equity shares, but still, if you have any doubt, you can ask me. We will solve your homework questions. Um, those students who are interested to answer, please raise your hand and have consistency in life. Very important. Without consistency, you won't get the result, and you have to believe on yourself while doing any hard work. Okay. So raise your hand for accounting standards. Those students who never answered accounting standard names. Aniruddha Nayarji. Good morning, Yes. sir. Good morning. चालू कर दीजिए first accounting standards. First, disclosure of accounting policies. To valuation of inventories, the cash flow statement for contingencies and events occurring Hmm. before balance sheet date and before balance sheet date. Fifth, net profit and loss for the period prior, items and changes in accounting policies. Seventh, construction contracts. Ninth, revenue recognition. Tenth, PPE. 11th, for the effects of changes in foreign exchange rate. 12, government grants. 13, investment. 14, accounts for amalgamation. 15, employee benefits. 16, borrowing cost. 17, segment reporting. 18, related party transactions. 19, leases. 20, EPS. 21st, consolidated financial statements. 22nd, accounting for taxes on income. 23rd, accounting for investments in associates in consolidated financial statements. 24th, discontinuation of operation. 25th, interim financial reporting. 25th, intangible assets. 27th, financial reporting of interest in joint ventures. 20th, impairment of assets. And 29th, provisions, contingent liabilities, and contingent assets. Okay. Very good. Hardik. Good morning, sir. Good morning. Have you completed investment in shares? Yes, sir. How many hours you studied yesterday? सर काउंट नहीं करा लेकिन सर कर रहा था. ओके, ठीक है. शेयर्स के सभी सम्स हो गए आपके? हाँ जी सर, सारे कर लिए. डिफिकल्ट थे, इजी थे? सर इजी था, निकल गए. राइट शेयर्स के कितने ट्रीटमेंट होते हैं? सर 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो सेल करेगा या रिनाउंस करेगा. सॉरी, रिनाउंस करेगा या परचेज करेगा. परचेस करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, पर रिनाउंस नहीं, किया तो कहाँ पे डाल देते उसको? अगर रिनाउंस करेगा तो भी 2 ऑप्शंस है उसके पास. अगर रिनाउंस करा और उसका बाय चांस वो खरीदा ही उसने शेयर राइट इशू के लिए था, तो फिर वो रिनाउंस करेगा तो वो उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा अगर उसका एक्स राइट प्राइस नीचे चला गया. अगर उसका बाय चांस उसने पहले से खरीदा हुआ था और वो मतलब अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना चाहता है, तो वो उसका पीएनएल में जाएगा अगर वो रिनाउंस करेगा. Very good. And what is the treatment of dividend? If shares are in last year also and current year also, so where अगर you are going to record that dividend? सर अगर लास्ट ईयर है और करंट ईयर है तो इसका मतलब पोस्ट डिविडेंड है, और पोस्ट डिविडेंड होता है तो वो पीएनएल में जाता है. And pre-acquisition dividend होगा तो? तो सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चले जाएगा. ये आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो पूरा? हाँ जी सर. इतना कैसे याद हो जाता है आपको? प्रैक्टिस? सर कॉलेज में भी पढ़ा था. कॉलेज में भी पढ़ा था इसलिए ऐसा, हाँ जी. मतलब मैं पढ़ा था तब नहीं समझता, कॉलेज में पढ़ा है इसलिए समझ में आ रहा है. नहीं सर, पहले से पढ़ा हुआ था, आपने कराया तो रिवाइज हो गया. चलो, बहुत बढ़िया. बहुत मेहनत कर रहे हो आप, फल मिलेगा आपको. यस. चलो हार्दिक, हाँ जी सर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर होमवर्क. ओके. हाँ जी सर. चलो, टेल मी now one by one student. Okay, I will ask you equity shares question first.
So first question of equity shares, I think we have completed. सर एक डाउट था छोटा, वो इलू 2 नहीं हुआ था। ILU 6 we have completed, no? नहीं सर, इलू 2 होमवर्क वाला वो नहीं आया क्या आपको? वो नहीं आया सर, वो एक थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो. We'll start with illustration 1 and then I will ask you questions in illustration from illustration 6. Okay? यस सर। चलो ठीक है. So we'll do homework first. Those students who are interested to answer homework answers, please raise your hand. Huh? Other students also. So at least I will understand how many of you are done with the homework and who are interested to answer it. Yes, raise your hand. Those who already solved all these questions. सर मैं म्यूट कर लूँ? Yes, बेटा म्यूट कर दीजिए. थैंक यू सर। Only Anuradha solved. Anirudh. Other students हार्दिक है, अविनाश है, रश्मि है, तांबेश्वरी जी, खुशी, किरण मिश्रा, पूजा. ओके, गुड. बेटा होमवर्क नहीं करना है ना? आदिश्री आपने क्यों नहीं किया होमवर्क? एंड ट्राई टू आंसर. यस आदिश्री जी, व्हाट इज द रीजन नॉट टू डू होमवर्क? Sir, I am not well, sir, so I didn't it. अच्छा, यू आर नॉट वेल. Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं. अमन आपने क्यों नहीं किया अमन होमवर्क? जो भी रीजन है दीजिए. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्यों नहीं किया होमवर्क? ਸਰ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। अमन बेटा एक बात मैं बताता हूँ. जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्टोरी विथ यू. यस सर। मेरे दादी की डेथ हुई थी सीए फाइनल के 2 महीने पहले एग्जाम के. एंड माई क्लासेस वर गोइंग ऑन. सिर्फ मुझे पापा ने उस दिन का छुट्टी लेने लगाया. हम लोग पूरे सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो चुके थे टू पास माई सीए एग्जाम्स. और आपको सबसे अलग होना पड़ेगा. एंड दिस फंक्शंस, आपके बिना वो फंक्शन रुकने वाला था क्या? नहीं सर। तो बेटा फर्स्ट थिंग ये सब आपको ध्यान में रखना है कि यस। ये सभी चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. उसके बाद जो फंक्शंस अटेंड करने वो करो. ओके सर, थैंक यू। पर ये रीजन मत दो बिकॉज होमवर्क कंप्लीट करना इज नॉट कि आप लोग फिर बाद में बहुत पछतावा होता है एक एग्जाम जाने के बाद. तो ये आप लोग देख लीजिए जो भी है. जो दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग होमवर्क और आपको मेहनत नहीं करने, तो भाई आप टाइम वेस्ट मत करो ये कोर्स में. आई एम सीरियसली टेलिंग यू. और फर्स्ट एग्जाम होने के बाद यू विल नेवर फाइंड कि ये डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा ही लगेगा आपको. इट इज नॉट इजी देन. फर्स्ट एग्जाम इज ऑलवेज बेस्ट एग्जाम इन लाइफ. चलिए ठीक है. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग होमवर्क, प्लीज अदर स्टूडेंट्स, इतने से स्टूडेंट्स आर डूइंग होमवर्क, इट्स नॉट गुड. And unquoted long-term investment is carried in the books at a cost of 2 lakhs. Now, what is unquoted? Unquoted means which are not available in market. Okay, easily. तो अनकोटेड मतलब इसका एक सेकेंडरी मार्केट होता है. ओके, सो इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इज कॉल्ड एज अनकोटेड. ओके, सो अनलिस्टेड. It is carrying an 2 lakhs. The published accountants of the unlisted company received in May 2001 shows that the company was incurring cash losses and declining the market share, and the long-term investment may not fetch more than 20,000. How will you deal with the preparation of the financial statements of R Limited for the year ended 31st March 2001? So, what is the answer, Hardik? पूजा आंसर दीजिए बेटा इसका. पूजा, यस बेटा, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, ऋषिता आंसर दीजिए. व्हाट हैपन?
ऋषिता जल्दी अनम्यूट कीजिए ना खुद को। अरे इफ यू आर नॉट नोन आंसर एटलीस्ट वो तो भी बताइए। अनिरुद्ध कर दीजिए। सर इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको हम फिर 20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि जो लॉसेज हैं वो अदर देन टेम्परेरी होंगे। और जो बाकी जो हमारा लॉस होगा सर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हाउ करेंगे। आर यू गोइंग टू आंसर इट इन एग्जाम? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सर वी विल चेंज इसको 2 लाख से 20,000 कर देंगे एंड जो 1,80,000 का लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। क्योंकि ये जो लॉस है वो अदर देन टेम्परेरी लॉस है सर इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा अब नहीं तो उसको हम कैरिंग कॉस्ट पे रखते हैं। Right. Read the answer. The the question status that financial statements questions are 1 minute, huh? Hmm. facts of the case. The question status that financial statements for the year ended 31st March are still under preparation. Provisions of AS. As per AS 13, investment classified as long-term investment should be carried in the financial statements at cost. However, provision for diminution should be made to recognize a decline other than temporary 1 in minute. the Long term investments, आराम से पढ़िए. Long term investments, you have to record it at cost. cost. But if there is a provision for diminution other than temporary, means it's a permanent In the value of reduction individually. Okay. yes, sir. Hmm. Also, the standard states that indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets and results, and expected cash flows from the investment. Okay. And So some indicators are there whether investee will get the cash flows from it or not. If he is not going to receive cash flows from that investment, why he should record it at cost? Understood? yes, sir. Conclusion. The provision for diminution should be made to reduce the carrying amount of long-term investment to rupees 20,000 in the financial statements for the year ended 31st March 2000X1. Profit and loss account debit 1,80,000 to investment account 1,80,000. Okay, beta. Yes. Note. Note: it is assumed that the financial statements are yet to be completed and approved by the board of directors. Also, the fall in value of investment has been considered on accounting of conditions existing on the balance sheet date. Okay. Very good. Now this line you won't understand it now. This sentences. Why? Because we have yet not completed accounting standard 4 contingencies and events occurring after balance sheet date. When we will finish it, you will understand it. Okay. So have patience. You won't understand it now. Okay. ठीक है. Note ये question नहीं समझेगा. चलो. We are moving to next question. X Limited on Hmm. 1 January 2000 X1 had made an investment of rupees 600 lakhs in the equity shares of Y Limited, of which 50% is made in long-term category and rest as temporary investment. So The long term में कितना? 300 lakhs. And in short term 300. Okay. 300 lakhs. The resaleable value of all such investment on 31st March 2000 X1 became rupees 200 lakhs as Y Limited lost a case of copyright. From the given market conditions, it is apparent that reduction in the value is not temporary in nature. How will you recognize the reduction in financial statements for the year ended 31st March 2000 X1? What is the principle of short term investment, my dear? For short term, we have to take the cost or fair value, whichever is lower. Cost or fair value, which is lower. Okay. What is the fair value and difference between market value?
Sir, fair value is between two knowledgeable people, knowledgeable buyer and knowledgeable seller who are willing At to arm's length price. willing to do transaction at arm's length. वेरी गुड अनिरुद्ध. कहाँ से हो आप? मैं चंडीगढ़ से सर. फर्स्ट टाइम? यस सर, फर्स्ट टाइम. फाउंडेशन? नो सर, मैं तो इंजीनियर हूँ सर. डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स इस बार छा गए भाई. क्या इस बार तो बहुत पढ़ाई करने वाले बच्चे मिल गए. क्या बात है. 300 short term and cost of fair value. And what is the market price? Market price which is easily available in the market, correct? Fair यस सर. value, sometime we have to calculate it. It is a price. And in the standard, in S2, we consider which value? In S2, it is a market value, fair value, or net realizable value. Net realizable value. Now, what is the difference between net realizable value and fair value and market price? Market price are easily available. Net realizable market price is for assets which we don't own, sir, and net realizable value is for assets No, which I we own, sir. use the word entity specific. Yes, entity specific, sir. Is net realizable value. And Yes, market price is market available price. वो तो है. And fair yes, value is between two knowledgeable parties. So there is a difference. yes, sir. Net realizable value is an entity specific. Yes, sir. Okay. Fair value is the two knowledgeable persons. They will, as you have correctly said, okay, their willing amount at arm's length price is called as fair value, and market price which is easily available. So here we use the word fair value in S2 NRV, and in S10 which value? So Anirudh? cost and fair value, sir. No, there is no fair value. There is revalued value. Revalued value. Yes, sir. So every accounting standard you use different words. Yes, And we sir. have to understand that words. Cost and revaluation model we understood, no? Yes, sir. Revaluation is based on technical person. Yes. Okay? Yes, sir. So there are different words for different accounting standard. So S2 के लिए, yes, one more time. S2 के लिए Sir, cost and net realizable value, नेट whichever is रियलाइज lower. कॉस्ट तो सब में है भाई. Yes, कॉस्ट sir. तो कोई नहीं है. हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन S10 Re, uh, revalue. revalued, and in S13 Yes, 13. Sir, fair value. fair value. Very good. Now, yes, tell me at what price you are going to record this. Short term you will record at 100, Yes, sir. and here it is permanent reduction, so you will record at 100. Yes, sir. Okay, so in both cases, One will be, sir, fair value. The short term will be at fair value, which is 100, and long term will be because there is other than temporary reduction, so that will also be 100. yes, that will be also recorded in P&L. And short term investment we already recorded cost or fair value whichever is lower. Chalo. Yes, illustration 2. Read the answer. Facts of the case. X Limited invested rupees 600 lakhs in the equity shares of Y Limited. Out of the same, the company intends to hold 50% shares for long-term period, that is rupees 300 lakhs, and the remaining as temporary investment, that is rupees 300 lakhs. Provisions of accounting standard. As per AS 13, emphasis should be on the intention of the investor to classify the investment as current or long-term, even though long-term investment may be readily marketable. Further, the carrying amount of the current investment is lower of cost and fair value. In respect of current investment for which an active market exists, market value generally provides the best evidence of fair value. Moreover, that long-term investments are usually carried at cost. However, when there is a decline other than temporary in the value of long-term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline. Conclusion. In the above case, irrespective of the fact that investment has been held by X Limited only for 3 months, that is from 1 January to 31st March 2000 X1, the emphasis will be on the intention of X Limited to classify the investment as current or long-term, even though long-term investment may be readily marketable. Also, the realizable value of all such investments on 31st March became rupees 200 lakhs, that is 100 lakhs in respect of current investment and 100 lakhs in respect of long-term investment.
Accordingly, the carrying value of investment held as temporary investment should be shown at realizable value, that is rupees 100 lakhs. The reduction of 200 lakhs in carrying value of current investment will be charged to the profit and loss account. Here, while Limited lost a case of copyright which drastically reduced the realizable value of its shares to one-third, which is quite a substantial figure. Losing the case of copyright may affect the business performance of the company in the long run. Hence, it will be appropriate to reduce the carrying amount of long-term investment by rupees 200 lakhs and show the investment at rupees 100 lakhs, since the downfall in the value of shares is other than temporary. The reduction of rupees 200 lakhs in the carrying value of long-term investment will also be charged to the statement of profit and loss. हार्दिक भाई, हार्दिक, यस बेटा. सेकंड इलस्ट्रेशन इजी और डिफिकल्ट? अनम्यूट किया है मैंने आपको. सर अच्छा मैं देखा नहीं सर, सेकंड वाला आप समझ में आ गया सर? नहीं समझ पाए या अभी समझ गए? आ गए सर, समझ में आ गया इजी था ये तो, क्यों नहीं आया आपको? सर। मेरे को ना प्रॉब्लम हुई थी इस लैंग्वेज में समझने में कि 200 lakhs था, मेरे को लगा कि 200 lakhs ओवरऑल है, जबकि अच्छा, 200 lakhs है सबका, दोनों का इक्वल था। उधर वैल्यू में वो डिफरेंशिएट नहीं करा था ना उन्होंने, तो लैंग्वेज में मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. यस सर। चलिए, illustration 3 was not your homework. Illustration 4. Sir, Messrs. Yes. Messrs. Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October 2000 X3 at the cost of rupees 2,50,000. It also earlier purchased gold of rupees 4 lakh and silver of rupees 2 lakh on 1st March 2000 X1. Market value as on 31st March 2000 X4 of the above investment are as follows. Shares 2,25,000, gold 6 lakh, silver 3,50,000. What is the cost? The cost of shares is 2,50,000. Cost of gold is 4 lakhs and cost of silver is 2 lakhs. How are you going to deal with this? Sir, for the current assets, again, sir, we will lower of cost and fair value, and for the long-term assets, lower this we will carry it Where at. it is given that they have intention of long term or short term? Sir, we will assume that shares are for short term and this gold and Now, silver is for long term. now see, if same question comes, for example, here, PAX is given, their market values are also given. Provisions, if it is less than, if shares, as per age 13, if investment in shares, if the investment is purchased with the intention to hold for the short term period, then it is classified as current investment, और वो cost और fair value which is lower पे record होगा in shares. And gold and silver are generally we purchase it with the long term intention, generally. Okay. इसको सर So, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसमें कोई अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन नहीं होगा सर. नहीं है. तो सर जो शेयर्स होंगे उनका फेयर वैल्यू 2 लाख कंक्लूजन 20. पढ़ो. हाँ जी, कंक्लूजन पढ़ो. Thus, in the above case of shares, it will be classified at lower of cost and market value, that is 2,25,000. Further, if equity shares are acquired with an intention to hold for long-term period more than 1 year, then should be considered as long-term investment to be shown as at cost in the balance sheet of the company. However, provision for diminution should be made to recognize a decline if other than temporary in the value of investments. Also, the investment in gold and silver purchased on 1st March 2000 X1 should continue to be shown at cost since there is no other than temporary diminution on 31st March 2000 X4, that is rupees 4 lakh and 2 lakh respectively, though their market values have been increased. ठीक है भैया, बहुत बढ़िया.
So you understood this answer, how to write it? Yes, sir. Next. Chalo, we have completed. Any doubt in these three questions? ठीक है, अनिरुद्ध जी म्यूट कर दीजिए. Any doubt? Sai Charan, yes beta. So illustration for question ones. Show the questions. Illustration. Four. What is the doubt? Here it's in a garments manufacturing company, right, sir? Why don't हाँ. gold and silver be their raw material or If they something have else? idle money, Because they can buy it, no? Instead of keeping it idly, we will have some investment in gold or shares. Okay, that Sai is what, Charan. sir. My doubt was. Hello, sir. हाँ. As it is a company involved in manufacturing garments, why don't we consider gold and silver as an raw material? In the question that isn't mentioned anything regarding investments, right, sir? Raw, acha, current investment. Are you going to ask? Yes, sir. Raw You material. can Garments. assume uh yes, as a short term also, no problem. You will get marks for that. Sure, sir. Yes. Any other question? No? Then Pooja. Yes, Pooja. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. शेयर्स के आंसर्स दोगे आप? यस सर. हैव सर डन विथ योर एक्चुअली होमवर्क? मैं आपने बोला था ना उस समय मैं मतलब यहाँ पे थी, मतलब थी नहीं, मैं 1 मिनट के लिए चली गई थी, सॉरी सर इसलिए. ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे हादसे होते रहते हैं. चलो 7 नंबर क्वेश्चन. सी व्हाट यू हैव टू आंसर पूजा. एक तो आपको लॉट्स बताने हैं, कितने लॉट में हमने खरीदा. हाउ मेनी लॉट you are going to purchase, number one. Then the treatment of in the case of sale, you want to tell me the working note. Okay, whenever there is a sale, we will prepare one working note. Have you done with your answer part beta? How much time you have taken? कितना टाइम लगा आपको? सर To do मुझे this टाइम homework? तो कितना टाइम लगा? सर एक 5-6 घंटे. टाइम ज्यादा लगा सर. हाँ इतना लग गया, मतलब मुझे ज्यादा टाइम लगा काम करने में. ठीक है, बहुत दिनों के बाद आपने कुछ तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए, करेक्ट? यस सर. कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है. I'm not going to take each and every question in writing. We'll do it. 1-2 questions we'll solve, and maximum questions we'll discuss it. It's not very difficult. Same adjustments are there, no? यस सर. Okay, चलो बताइए. Mr. X purchased 500 shares at 62,500. Now here very easy. हाँ, brokerage का क्या करते पूजा जी हम लोग? In case of सर purchase brokerage. सर जब परचेज करेंगे तो ऐड करेंगे. Okay, and sale करेंगे तो? प्लस करेंगे सर. Very good, very good. So 500 shares, lot 1, यस सर. 62,500. Some years later, the company resolved to capitalize its profit. What is the meaning of capitalize its profit? It is called as bonus shares. Okay? Capitalize its profit का meaning होता है bonus shares. You can use different word also. So you can write it on your notebook. Capitalize its profit is equal to bonus shares. In 100 pages book, you can write it. ओके सर. Capitalize its profit is bonus shares. आजू बाजू में आवाज नहीं रहेगा, ऐसे जगह पे जाके बैठे तो अच्छा होगा, बिकॉज पूरा इंडिया सुनता है लेक्चर. ओके ठीक है, आई नो घर पे बैठे तो आवाज आएगा ही, इफ पॉसिबल. ओके
one equity bonus shares for every shares held by them. So lot 2 for how many shares beta? सर वन मतलब इसके पास 500 थी तो 500 ही ले दोबारा ले बोनस एट शेयर तो मिलेगी। कॉस्ट कितनी होती है बोनस शेयर्स की? नील सर नील। Okay, 0. Now before bonus the price was 175 and after bonus the price is 92.5. Why there is a difference before bonus and after bonus? सर बिकॉज बिफोर बोनस मैंने बताया था इसका रीजन. कम What is राइट the सर ये कम राइट मतलब बोनस से पहले अगर मिलेगा तो 175 पे था और बोनस के बाद 92.5 पे क्यों आए शेयर्स? ठीक है, रीजन ये था कि सप्लाई बढ़ चुका है, मार्केट यस में शेयर्स ज्यादा हो गए तो प्राइस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन. ओके, सो इफ योर सप्लाई इज मोर, market price is automatically getting down. Okay, यस सर Mr. X sold the bonus shares and received 90 rupees per share. So how many shares they sold? 500 शेयर 500 shares, bonus share means. And tell me whether are you going to use FIFO method over here or compulsory weighted average? वेटेड एवरेज सर। Acha, what is the selling price? 90 rupees means 500 सर into 40, 500 into 90 is 45,000. Correct? यस सर And what is the cost for this? 45 60 to 500 shares. 60 to 500 for how many shares? सर 1000 शेयर के लिए। So what is your cost per share? सर 500 के लिए होगा 60 to 500 divided by 1000. No बेटा मैंने निकाला ना, ये देखो ना, 60 to 500 into, so one share 62.5. Correct? So यस for सर 500 share it is 31,250. यस सर So 60 to 500 divided by 1000 into 500. That is the simple calculation. यस सर So what is your profit? प्रॉफिट विल बी Hmm. 13,750। Now how are you going to record it? Investment account debit side. यस सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में Debit side प्रॉफिट है। में number of shares and cost. How many shares? सर फर्स्टली 500 शेयर हमने 60 to 500. Then you Yes, will sir. write 500 shares Bon- at 0. Then you will write buy bank 500 shares 45,000. And then you will and write two profit to profit 13,750. 7। yes sir Okay. Now what is the cost per share? 62.5, no? सर ये 62.5 yes sir And in market it is 90 per share. yes sir which No, is no, no, lower no, 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 no. 92.5. After this, no? 92.5. After bonus, 92.5. And 62.5 is your cost. So you are going to record it at 62.5 whichever is which lower is sir lower. Okay. So 500 shares. So 2 working notes you are going to prepare. One is for closing Profit. balance yes sir and one is for profit on sale of shares. yes sir And this is your presentation. yes sir Now dates are not given, therefore we have not written date column. 2 bank, 2 bonus, buy bank, 2 P&L, that is a profit, and buy balance carried down. yes sir Easy, Che? yes sir Okay, very good. And what is the yes, pro forma of profit, sales serial number, particulars, computation rupees, Puja. Then yes Roman 1 sales value, Roman 2 cost of acquisition, Roman 3 profit oblique in bracket loss. Loss होगा तो negative आएगा. And how you have calculated cost of shares? 60 to 500 divided by 1000 into 500. yes sir Got this? yes sir
इजी है? यस सर। बना लोगे वर्किंग नोट्स अच्छे से एग्जाम में? यस सर। यस, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। नो नो नो, आपको नहीं, एनी डाउट अदर स्टूडेंट्स? If you have doubt, write it in chat section. I have doubts, sir. Write it in chat section. देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है. यस, साई किरण कुमार, रेज योर हैंड. हाँ जी. Sir, just I'm having a general doubt. Here, what happened in the problem is first he has purchased 500 regular shares, then 500 bonus shares were allotted to him. Later, it was given that he has sold 500 bonus shares. But in practicality, in Demat account, first in first out debit will happen, sir. Just can you correlate with practicality? I'm asking. Practical. First in first out basis Yes. in Demat account it will be debited, sir. He cannot do bonus shares. He cannot sell, sir. How it can be correlated with the accounting standards? I'm asking you. No, because see, in real life, in Demat account, those shares, if you have, it will be recorded only for your tax purpose. Okay, that short-term capital gain, if you calculate, or long-term capital gain, whatever the case. So on first in first out basis it will be Yes. debited, sir. Yes, but as per accounting standard 13, accounting is different, and see, taxation is different when we are going to understand it in accounting standard Taxation is 22. different, sir. I'm not talking about Demat account only. You leave about taxation. I'm talking about Demat account only. Okay, they will calculate according to FIFO. That I'm asking, sir. Yes, there. See, why they will calculate weighted average shares for you, no? Yes, sir. Yes. That is your calculation. So they will just first in, first out, they will do. That software will do in that way only. So that will not be applicable here, sir. That is Not applicable here in this our accounting, I'm asking. in accounting, you have to follow compulsory weighted average method. It is given in the accounting standard 13 for shares. Why? Because see, some shares are free of cost and some shares are having more cost. So you will consider always weighted average number. Okay. We do not have any other option. As per AS13 mandatory, it is weighted average method. That is okay, sir. But selling But of now bonus Demat shares account, like see, that. Demat account, we are not going to tell them no, to calculate weighted average for people, investor. They will calculate in their own way. Why we should fight with them? They are giving you that calculation. It's okay, no? That Okay, you sir. should calculate it. They are giving Okay. you extra service for that, no? My clarification is the selling of bonus shares like that, it will not be there like that, I'm telling, sir. Only first in first out basis, it will be sold like that, I'm telling. Okay, in practical, no? Yes, sir. Yes. Then what is your question? Achha, you are just telling us that in practically they are following the It will happen like percentage. that, just I'm telling, sir. Just I'm telling. Okay, okay, okay. I thought you have any question. No, ठीक है. चलो, now question number 7/8. 8. Acha, Tambeshwari ji is asking why we take 92.5. Acha, good question. Tambeshwari ji, selling price is different, but in exam proper, they have mentioned it after bonus, your market price. We will assume this is on 31st of March. We will assume that is 31st of March and sales is before 31st of March and therefore it is 90 rupees. Okay. So, तांबेश्वरी जी आपको ये assume करना है कि 92.5 rupees ये after on 31st of March है. ओके बेटा, समझ में आया तांबेश्वरी जी? राइट इट इन कमेंट सेक्शन, यस और नो. ठीक है. नगमा बेटा, चलो नगमा. जी सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. चलो 8 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा. यस. हेलो. नगमा, क्या आजू बाजू की आवाज मत आने दीजिए.
सॉरी सर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बोलिए। रीड करूँ सर? नहीं, मैं रीड करता हूँ, आप मुझे लॉट बताते जाइए। ठीक है। रजत हैज ओवर। नगमा जी बहुत आवाज होगा तो हम लोग दूसरा किसी को पूछू? नहीं सर, बस हो गया सर। ओके। Rajat has 50,000 equity shares at a book value of 15 per share. So lot one. Yes, now Yes. focus. Yes sir। 50,000 shares. जी सर। What is the cost? 15 per shares। 7,50,000. फटाफट बोलिए। जी सर। On 20th June, they purchased another 10,000 shares at 16 per share. 10,000 second lot sir, 10,000 Hmm. and 160,000। 1,60,000. जी Okay. सर। On 1st August, now how many shares they have? पर 60 टोटल 60 होगा ना सर? 60,000 shares. हम्म। And they are issuing one share for 6 shares. So what is the bonus share? Lot 3? ठीक सर। 10,000. जी सर। 10,000। 0. Why are you calculating 60,000 into 1 by 6? It's 10,000. You can see on the screen also. ओके सर। Huh. On 31st October 2001, the directors of P Limited announces a right issue. Now, how many shares you have, beta? 60,000 ना सर? 60,000 और एंड अरे सी ऊपर लॉट लिखे मैंने, तो आप क्या कर रही हो? 50, 10, 10 तीनों लॉट लिखे मैंने। कितना हुआ टोटल? 70 सर। आप 70,000। स्क्रीन पे फोकस करो ना, आप आपके आंसर में मत फोकस करो। आप ठीक। स्क्रीन पे फोकस कीजिए। आंसर्स को छोड़ दीजिए। अभी अभी आप लोग एक रिवीजन कर रहे हो, ये स्क्रीन पे फोकस कीजिए ओनली। अभी छोड़ दो आंसर, नोटबुक बाहर रख दो उधर पीछे, कुछ भी मत देखो उसमें। हाँ, कितने शेयर्स है आपके पास? 70,000 सर। यस, यू हैव टोटल 70,000 शेयर्स। आंसर को देख रहे हो ना अभी? ओनली स्क्रीन। जी सर। हाँ, 70,000 shares. Now, how many shares you are giving? 3 shares for every 7 shares. So, what is the right issue that you are going to record? How many shares? 30,000. Correct? Out Yes. of that, he sold 1/3 entitlement to Umang. So, कितने shares Umang को बेचे? उमंग को 1/3 means how much? 30,000 का 1/3. 10,000 सर shares. 10,000। हाँ सर। इतना टाइम ले रहे हो नगमा? 1/3 निकालने को 30,000 का 1/3 के लिए इतना टाइम लगता है क्या? आई सर डोंट नो व्हाट आर यू पर डूइंग। सर थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है और कुछ नहीं। तो 30,000 का 1/3 इज 10,000, तो जी बचे सर। कितने शेयर्स? 20,000। तो बचे 20,000 शेयर्स एंड यू बॉट इट एट व्हाट प्राइस? 15 तो रुपए। यस सर। सो 20,000 शेयर्स एट 15 सब आता है बेटा, आपको फिर भी नहीं बोलना है। इंटू 15 रुपीज, सो व्हाट इज द प्राइस? 3 लाख रुपीज। बस हो गया, इतना सिंपल था। एंड 10,000 यू विल ट्रांसफर इट टू पीएनएल अकाउंट। P&L account. खत्म हो गया. So how many shares now you have total? So 90 90,000. And what is the cost? at 15 rupees। 15 15? सर। अरे 90,000 की कॉस्ट 15 रुपीज कहाँ से आई? नहीं सर। सॉरी 750, सर। 160, 3 lakhs. 750। Yes. What is the price? सर 460 4,60,000। How? And what about 750? तो सर एक सेकेंड सर, 750 देन प्लस 160 प्लस 3 लाख। 300.
12, Screen. 12 lakh 10,000, sir. No, I have already written that 12 lakh 10,000. जी सर. I don't know what happened, but आपने बहुत slow answers दिए. So at least now you have understood that you have to improve your confidence. जी सर. Okay, सिर्फ ये मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप इतना क्यों slow बता रहे थे. See the answer 12 lakh 10,000. Easy. And जी dates सर. are also important over here. 1st April, first date is 1st April, then 20th June, then 1st August, and last one is, don't consider 31st October, consider 5th November. Okay, so 31st October is a date of right issue or announcement, whether you are going to see announcement date or purchase date. ठीक है सर. कौन सा डेट देखोगे? सर वो अनाउंसमेंट वो परचेज डेट ना सर. हाँ, परचेज डेट इज 5th नवंबर. जी. ठीक है. जी सर. कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई? तो कैलकुलेशन बहुत स्लो किया है. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, कोई बात नहीं. मैंने सिर्फ बताया कैलकुलेशन मस्ट बी फास्ट, एकदम स्पीड में करना पड़ता है एग्जाम में. ओके सर. एक्चुअली कैलकुलेटर सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था इसलिए. ठीक है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम बहुत स्पीड में आंसर देना. जी सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. TYK 10. Who wants to answer it? रचना. यस रचना जी. गुड मॉर्निंग सर. आवाज ही नहीं आ रहा है. Am I audible, sir? You are audible, but are yes. Are you using headphone? No, sir, I'm not using. Okay. थोड़ा सा जोर से बोलिए. Yes, sir. Okay. So Rachna ji, yes, tell me lots. Lot 1. Okay, we'll start. On 1st April 2001, XY Limited has 15,000 shares. I think this is same question. Similar, sir. Most of the questions are similar. Okay. No, institute also does not have any, other things to do. If your concepts are very clear, these are very similar questions. Okay. Yes. Chalo. हाँ, tell me. 15,000 shares, you bought it for 15 rupees. 15 rupees. So what is the cost? 2,25,000. 2,25,000. Next, nominal value 10 rupees. Why nominal value is important? Sir, if we have to, if there is any dividend, we will be calculating that. So that this value. is for dividend calculation. So you can write over there dividend calculation. Face value is important. Very good. On 1st June 2001, XY Limited acquired 5,000 equity shares for rupees 1 lakh. Acha, tell me, Rachna ji, Yes, are you sir. finding this cross questioning is interesting, or I only solve these all questions? Cross questioning is good, sir. We'll get to know how we know. Okay, no, I'm just asking it ki whether are you finding these sessions means on YouTube or on Zoom? YouTube पे भी अच्छा था सर, पर Zoom is very good because Oh. खुद ही करते जाएंगे तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, but this is a bit interactive and good. Okay, ठीक है. Yes. So XY Limited 5,000 equity shares you bought. You are also from direct entry? Yes, sir. Believe me, आज तक मुझे डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में ऐसा कभी लगा नहीं था कि दे विल आंसर सो फास्ट. बहुत बढ़िया. मतलब हर एक स्टूडेंट, फाउंडेशन का बच्चा डरता नहीं है, तो फाउंडेशन का रिजल्ट भी कम लगा था, तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स आर वेरी लेस इस टाइम पर. डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स मेरे लाइफ में मैंने इतना फास्ट कैलकुलेशंस आप लोगों के देखे नहीं है. मतलब दोज हु आर आंसरिंग. हार्दिक इज सेइंग सर कब 3 आवर्स निकल जाते हैं समझता ही नहीं है. आपके साथ भी Yes, रचना जी ये होता है? yes, sir. आपके क्लास में पूरा मोटिवेशन रहता है, सुबह उठा भी नहीं जाता है, फिर भी आते हैं. अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया.
On 1st June, so they acquired 5,000 equity shares. Yes. So 5,000 equity shares for 1 lakh. 1 lakh. Very good. Lot 3. Now tell me, lot 3, bonus was declared at the rate of 1 share for 5 shares. Yes, sir. Total is 20,000 we have, and for 1 by 5, that is 1 by 4,000. 5. That is 4,000 shares. And what is the cost for this? 0, sir. For bonus share, 0. no cost. Very good. Very good. Then right shares are to be issued to existing shareholder on 1st September. Whether you will consider 1st September or date of... Purchase, sir. Acha. The company will issue 1 right share for every 6 shares. So at 20% premium. So 20% premium means what? Rupees 10 plus 20%. 12. That 12 rupees. Okay. And no dividend was payable on these shares. Yes. वो तो हम लोग वैसे भी नहीं देंगे dividend. Yes, sir. हाँ. So Bonus tell and me, right dividend. how many shares you 4,000. have? 24,000 divided by 6. 24,000. You can check here. 15 plus 5 plus 4. Screen पे देखते रहिए. Yes, sir. That's what I'm saying. Okay. 24 divided by 6. 24,000 divided by 1 by 6. तो ये हो गया आपका 4,000. वेट 4,000 शेयर्स का आपने 12 रुपीज में दिया, पर आउट ऑफ 4,000 he took up the Half the right issue. half right issue. So 2,000 and 2,000 is sold at rupees 8 per share. And at what price he bought it? 12. 12. So lot 4 कितने का लिखूं मैं? 2,000. 12 per share. 2,000 and amount is 24,000. 24,000. Very good. And this 16,000 rupees transferred to P&L. very good. P&L. This 16,000 which you sold that, right, is transferred to P&L. Same adjustment is there, no? Yes, sir. कुछ है ही नहीं. Okay. Most of the questions are similar. Same. अभी डिविडेंड जो है वो 20% डिक्लेयर किया. नाउ 20% is on which value? Book value or face value? Face value, sir. Dividend What is is the always face value? 10 rupees. 10 rupees. So you are going to give dividend 2 rupees. Now on lot 1, 15,000 shares पे, lot 1, 15,000 shares. This dividend where to transfer? Yes, PM. Rachna. 15,000 shares पिछले साल भी थे. Last year we had. Yes, and sir. in current And this year also we also have. Okay, so it will be transferred to P&L because this is a post-acquisition dividend. acquisition. Yeah. And what about this 5,000 shares? That is after only current year, sir. So in So, investment account. Investment account का minus हो जाएगा. Correct है? मतलब on the credit side. Okay, Yes, sir. so I will reduce from this amount minus 10,000 for pre-acquisition dividend. Okay. Yes, sir. So now what is my cost? Total overall cost. Okay. Whether I'm eligible to get bonus shares के ऊपर dividend? No, sir. Bonus share or Zero. rights issue Right पे shares नहीं. dividend is 0. Okay. Yes, sir. Chalo. So tell me my cost. 225 2,59,000. plus 100 plus 24 minus 10. I think I'm getting 3,39,000. 39,000, sir. And how many shares I have? 15, 20, 26, sir. 26,000. 339. So 339 divided by 26. Okay. 13.0385. So yes, we'll do this at the end. And out of this, how many shares you sold? 2,000. No, half of the okay. half of the shares 13,000. sold and 13,000 is balance, correct? Yes, sir. And at what price you sold it? 16.5 5. minus brokerage. Minus 1%. 1%, no? Yes, sir. 2,123,555. 2,12,330. 2,12,000
355. is the sales value. And what is cost, beta? How are you going to calculate cost? 3,39,000 Divided for by 20,000. divided by 26,000 into 13,000. So my cost is 1 lakh plus 0.1 कर देता हूँ. 1,69,500. Say yes or no. Yes, sir. So what is my profit? 42,855. 42,855. And this 13,000 we will record at 169,500. We already calculated, no? Yes, sir. Cost. So that cost, market value is not given. So we will assume shares are recorded at cost. Market value is not given. So cost or market value which is lower. So second working note we won't prepare. Yes, Correct? sir. So how many working notes in this question? 3 or 4, I guess. Only one working note, no? Sales value. Why 3 working notes? Okay, sir. I calculated that bonus share and, sorry, rights issue also. Bonus share right issue, no need to calculate. You can Okay. calculate over there only. Yes, sir. Okay. Don't write anything in pre-acquisition dividend column. 10,000 we deducted. So instead of that, we have written on the credit side. We calculated profit correctly and buy balance carried down. This is how you will record your. See, if you have written this lot, fatafat lot ho jayega. So this is like a quick revision. In exam, you can directly start with this writing. Two balance brought down, you will write 15,000. See, only lot you will write on the question itself. 1, 2, 3, 4. Then 5,000 shares at 1 lakh. Then 4,000 shares you acquired for 0. Then 2,000 shares you acquired for, see, dates are important, 24,000. Then we got the dividend, that 10,000 is deducted. Instead of deducting it, we will write it on the credit side, correct? Yes, sir. Then 13,000, 2,12,355. Immediately we will prepare after this one working note, sales value as above, and then less cost of acquisition. 3,39,000 for 26,000. So for 13,000, how much? And profit on sale. And then you will get the answer. And in profit and loss account, what are you going to write in the profit and loss account, beta? Right, sold. Sold and the shares Post acquisition dividend we got post acquisition and profit on loss. Profit or loss on the sale. So here it is profit, so on the credit side. If it is loss, on the debit side. And then balancing figure will be 2 balance carried down. Easy or difficult? Easy, sir. बहुत ही easy था. See, this question we already solved, Rachna. Yes, sir. Similar we solved. The question number 3, I guess, illustration. Illustration Yeah. 3 or 2 we solved. 3 only. Or 4. कौन सा था? 4, I guess, sir. हाँ, 4 था. ILU 4, similar to ILU 4. So this is newly added questions in your study mat. Okay. And I think 13 number also homework or not given? Yes, sir. Homework. Homework था ना ये भी? Yes, sir. चलो, we'll do one question, all of you beta, in notebook or on rough pages. How are you going to solve it in the exam? रचना जी बहुत बढ़िया, जिस तरीके से आपने आंसर्स दिए इसी तरीके से कंप्लीट कीजिए. यस. सो इन्वेस्टमेंट चैप्टर, अभी तक आपको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे लगे और कौन सा डिफिकल्ट लगा? अच्छे तो सर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर था, वो बहुत एंजॉय किए. और फिर लास्ट का रिवैल्यूएशन मॉडल जो डिप्रिसिएशन का था वो भी अच्छा था. और ये भी अच्छा है सर. जस्ट इसमें थोड़ा मेरे को वो डिविडेंड में वो देखना था, बस उसी के लिए मैं आंसर करने आई थी सर. तो वो भी अभी क्लियर हो गया. उसी के लिए आंसर करने आई मतलब बाकी लेक्चर में नहीं आते आप? आती हो सर, बाकी लेक्चर में भी आती हूँ. मतलब इसमें वो पर्टिकुलरली था कि डिविडेंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करना था मुझे, तो इस वजह से. देखो एक बात बता देता हूँ, आप मेरी डांट खाओगे ना तो पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो. कभी भी मतलब डोंट टेक इट निगेटिवली, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि यू ट्राई योर सेल्फ कि ठीक है इधर मेरी गलती हुई तो सर क्या करेंगे, मैक्सिमम सर डांट देंगे
कि क्या इतना इजी नहीं आता। जो नगमा के साथ हुआ नाउ शी अंडरस्टूड कि आई हैव टू इंप्रूव माई स्पीड इन एग्जाम। तो आपने तो बहुत बढ़िया बताया, कोई बात ही नहीं थी, एक एक आंसर आपने अच्छे से लिया। नाउ नेक्स्ट टाइम आई वांट के इफ आई आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड, तो yes you have to take that challenge कि sir you ask me any question from any standard, I will prepare in this way. Yes, I will sir. give you time ki yes we'll keep one competition so that at least you will understand ki where are you exactly. I will ask you from accounting standard 2, I will give you four standards, 2, 17, 18 like this, and we will have quiz on that. Okay, Yes, sir. chalo, yes beta, बहुत बढ़िया। चलिए we will solve one question in notebook, how we are going to solve it in exam with संकेत सर का स्पीड। तो देखते हैं, आ जाइए एक क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए, यस यस रचना जी म्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं अभी। Thank you. चलो, स्टॉप वॉच लगा देता हूं एंड देन वी विल हैव अ ब्रेक। और ब्रेक के उस पार वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। Otherwise, I will take one question of investment in debentures and then I will give you break. So break में you can solve other questions also. वन मिनट टिक टिक जी, रुक जाइए रुक जाइए। Yes, beta. Debentures are converted into equity shares. We are going to solve one question, Rashmi. Don't worry. We'll solve one question on that. एज 13 में स्टडी मैट में ना एक क्वेश्चन नहीं है, डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सितंबर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो देख लीजिए एक बार, और स्टडी मैट में इंक्लूड भी कर लेना है वो क्वेश्चन। सितंबर 2024 में आया हुआ है, भेज देते हैं। वो क्वेश्चन ऐड करना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए वो। यस, चलो विल स्टार्ट इन एग्जाम वे। On 1st April 2001, Mr. Vijay has 30,000 equity shares. I will write lot 1, 4,50,000. 10 rupees per share. Okay. 22nd June. 1st April है first. Then 22nd is a purchase 5,000 shares at 80,000. Okay. Directors bonus shares. I will do it lot 3. 1 share for every 7 shares on 10th August. So 10th August is important for me. So bonus shares है 30,000 plus ये 35,000 into 1 by 7. So this is 5,000. On 31st August, no, this date is not important. Right issue for every. Now how many lot you have? 35,000 into ये 5 हो गए. So I have now total 40,000 shares. So 40,000 shares divided by 8 into 3, 3 by 8. So 15,000 में से he sold, subscribe for, this date is important, 30th September, 4th date, 2/3 of the shares. So he opt for 10,000 shares at 15 rupees, lot 4, and 5,000 into 10, 5,000 into 2, P&L. Vijay received a 20% का dividend, 2 rupees, and dividend on lot 1 and lot 2, pre and post. पोस्ट वाला 22 जून का वो सब कुछ दिया हुआ है।
and he sold 20,000. So lot, ये weighted average concept, I'm going to use it. So nothing is new in this question, and there is nothing is, yes, difficult. तो लिखो books of Vijay, investment account, first April 2001 up to 31st March 2002. Script. What is the script in this? Equity shares in X Limited. Equity shares in X Limited. Date, particulars, number of shares, rupees, date, particulars, number of shares, and rupees. Draw fast. भाई रूलर क्यों नहीं मिल रही हमारी? आप पेज फॉर्मेट. Okay. So my format is ready. Now I will start. Okay. 1st April 2001. To bank. To bank. Sorry. To balance brought down. 30,000 equity shares. 4,50,000. Next, on 22nd June, to bank 5,000 shares, 80,000. Then 10th August, to bonus. I will show the calculation in number of shares column, or you can show it in the particulars column also. 5,000. Then you have 30th September, to bank 10,000 shares. At what price? 15 rupees. 1,50,000. Then you receive dividend 31st October
by bank in bracket pre-acquisition dividend only on 5,000 shares. That will be 2 rupees 10,000. On 15 November on this side by bank you sold 20,000 shares for 5 rupees premium, so 15 rupees, 3 lakhs. After half page you will have working note 1, profit oblique loss on sale. What is the sale date? 15 November 2001. Serial number, particulars, computation, rupees, Roman 1, sales value. Sales value is as above. What we have calculated is 3 lakhs in less cost of acquisition. What is the cost? Here I will take 450 plus 80 plus 150 minus 10. Okay, so my cost is 450 plus 80 plus 150 minus 10, 6,70,000. For how many shares? 35, 40, 50. 50,000. How many shares you sold? 20,000. So into 20,000. This working note you have to prepare 670 divided by 50 into 20. 2,68,000. So Roman 3, profit 1 minus 2, 263 minus 300, 32,000. And I will record profit 15 November to P&L, profit on sale 32,000. Then on 31st March 2, buy balance carried down. See, you left with 30,000 shares and your cost will be 670 divided by 50 into 30,000, means 4,02,000 you should get. If your investment account tallies, you are on the right track. Okay, your investment account tallies and star mark भी दे सकते हो आप. 4,02,000 आना चाहिए. 35, 40, 45. Oh, sorry. 35 नहीं 40, 50, 50,000, 50,000, 450 plus 80 plus 150 plus 320, 10 lakhs. 450 plus 80 plus 32,000. Sorry, it's my mistake. 32. 712. Sorry, it's my mistake. 7,12,000. Yes, 7,12,000. P&L account, date, particulars, rupees, date, particulars, rupees. राइट इशू कब मिला था? 30th September. 30th September 1. Buy rights sold. How many shares you sold beta right का? 5,000 into 2. 10,000. Then
दिस इज अ स्पीड बेटा, एग्जाम में लगने वाला. 31st October बाय डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन ऑन फर्स्ट, मतलब 60,000, एंड बेचा कब? 15 नवंबर बाय प्रॉफिट ऑन सेल 32,000, and 31st March to balance carried down. It's a balancing figure 70 plus 1,02,000 12.5 minutes. Time is 13 minutes maximum. Start to end. Easy or difficult? Yes. Yes, Rishita. Easy. So, beta, I have shown you how much time it needs to finish the question. ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा. 8 marks. साई किरण, 8 marks. Okay. So 13 minutes is okay, beta. Chalo. So I hope you are done with this question now. Before break, beta, I want to explain you some investment in debenture, X interest and cum interest concept, and then I will give you the break. Okay. Yes. Investment in debentures. How many of you have, finding problem in completing the question? Yes. Remove your hands, other students. Okay. Speed problem कितने लोगों को आया? Yes, sir, we have not finished with your speed. Genuinely बताइए. So I will give you some tips also. Many students. Anuradha, unmute yourself. हेलो सर. आवाज नहीं आ रहा है अनुराधा जी प्रॉपर. बोलिए. Hello. हाँ Sir, बोलिए. now I am audible. Yes. Sir, I'm taking, I think, 15 to 16 minutes, sir. Have you done this question with me now? Yes, sir. But still So you are last finding. working not. Okay. Last working. No. Yes, sir. Okay. So only last working note you have problem. Okay. So students, normally why are you finding this difficult when you are doing it for the first time? Don't worry. If you solve this all questions by using this tick-tick-ji technique, you won't find any problem beta. So your tick-tick-ji technique is very important. Second one, how to improve confidence, Anuradha ji. First, you can write this question on rough pages, means only important points like lot 1, lot 2, lot 3, how I have written, and then you can improve your speed. Okay. 13 minutes, 2 minutes extra is okay. If you can finish it within 15 minutes, it's okay. Okay. So don't worry. आशुतोष बोल रहे कि थ्योरी लिखने में मिस्टेक्स होती है, मतलब कि प्रॉपर फॉर्मेट में. It's okay, beta. Facts of the case, analysis. Don't worry about, see, again, I like that sentence. Don't worry about your results. Results are always byproduct. And
process is important, and process which is going on will improve your confidence. Okay. So process जो है वो enjoy कीजिए. Now one of my student, he is finding it now very difficult. He has attempt in January, but he is worried about the concepts. He cannot recall it, and it happens with every CS student. After certain days, if you do not prepare your 100 pages book, it is very difficult for all of you that, sir, how can I recall all these concepts? It's impossible. So whenever you are studying 10 pages, see, in 1 hour, any expert also, or if you are doing it for the first time, only 5 to 6 pages are possible. When you read it for the second time, then 10 pages are possible in 1 hour. And see, what is the normal mentality of students? 70% students out of 100, 70% students, they find first day is very, energetic. Second day, if there is repetitiveness, he is finding nahi ho raha hai mere se. Second day, you have your other priorities. Okay. And you give priorities to other things. So ये होता है सबके साथ, मेरे साथ भी नहीं. मैं discipline is very important in any course in your life also. 7 बजे मतलब 7 बजे मुझे लेक्चर को आना है. मैं रात को 3 बजे भी सोया तो भी मुझे 7 बजे लेक्चर को आना है. नथिंग, यस, आई कैन गिव एक्सक्यूज. हाँ, माइट बी मैं आपके साथ जब आ जाता हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, बट आफ्टर दैट बेटा मैं 1-1.5 घंटा सो जाऊंगा. सो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड. नहीं तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, अरे बस नहीं करना है. बट इंस्टीट्यूट हमें डिसिप्लिन सिखाती है. 7 o'clock मीन 7 o'clock, ऑन द काउंटडाउन ऑफ 7 o'clock हमें सबको, अभी ये आयाज भी है, हमारे सर भी है, आशा मैम भी है, ये सबको 7 बजे आ ही जाना पड़ता है. सो दिस इज अ डिसिप्लिन. ओके. And this is important for your success. Now, why ICAI classes are getting, famous? Reason is very simple. We are finishing this syllabus within a time. And second important point is that within 2 to 3 years, I can see the future. 2-3 years के बाद ICAI classes number 1 पे रहेंगे, because all students will take benefit of this. Okay. तो ये important क्यों है? Because of discipline. Every faculty has to come on that time. Okay. Second thing, so in study also, you have to be very disciplined in life, and don't think ki, sir, I cannot recall it. If you sit on one place, if you read that 100 pages ka book properly, you can recall any concept. Okay. So after 2 months, you are going to find it very difficult. Abhi kya lag raha hai? Abhi we are doing one standard now, you are finding it's interesting. But when all standards come together, फिर आपको नाचने लगेगा वो स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर. अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है. और तब कौन याद करवाएगा? तब आपकी 100 पेजेस की बुक आपको साथ देगी. मैं भी नहीं साथ दूंगा. तब 100 पेजेस की बुक आपको साथ देगी. और कॉन्सेप्ट भूल गए तो अगेन रिकॉल इट, इट्स ओके. तो ये चीजें ध्यान में रखना है अपने को कि संडे टू संडे सर ने बताया हुआ है, आई विल रिवाइज स्टैट कॉस्टिंग फॉर्मूले, I will revise FM formulae, I will revise income tax provisions, I will revise law provisions. Sunday को सिर्फ रिवीजन रखना है. And at the, in night also, 9 to 9:30, every day different subject you have to revise. 2 subjects one day, 9 to 9:30. Only that 100 pages book. One day law, one day in the practical subject, one theory subjects. Similarly, second day audit पढ़ रहे हो, audit and one subject. Okay. So one theory, one practical. And ये आपने schedule लगाया तो you will get the result. 100% you will get the result. Okay. Last 2 months only for revision. I will finish my syllabus up to February, and last 2 months I will do only revision, March, April. And in April month, I will go with some mock test papers. ये किया ना, and then tell me whether you are getting result or not. 100% रिजल्ट आपको मिलेगा. 100% रिजल्ट इन फर्स्ट एग्जाम. हाँ, बट इसमें से नो दिवाली फॉर यू. एक दिन ठीक है, महीने में 2 दिन टाइम पास, इट्स ओके. आई वोंट से कि 2 दिन उतना तो चाहिए ही चाहिए. योर वर्कआउट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एक टाइम 1 hour फ्रेश होके आइए, एंड जितना हो सकता है मंदिर जाइए, टेम्पल जाइए, मस्जिद जाइए, जहां पे भी जाना है. पर वो जो है ना,
30 मिनट्स वो भी आप दे सकते हो डेली बेसिस पे. इट इज ओनली फॉर एक मेंटल फ्रीनेस अपने को होना चाहिए. वो ध्यान में रखिए, थोड़ा तो चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग सबसे डिस्कनेक्ट हो जाइए. ना फैमिली, nothing important for next 7 months. Your study, sir, faculty, and जो भी आपका जहां पे 30 मिनट्स 40 मिनट्स यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, बस ये 4 चीजें. फैमिली ऑल्सो ये सेकेंडरी होनी चाहिए अभी. नो फैमिली फंक्शंस. इतना किया तो रिजल्ट आपके साथ है, ध्यान में रखना. ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज ओनली 15 स्टूडेंट्स कैन डू इट. ओनली 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100. सर हो नहीं रहा है हमारे से. बेटा, whichever you are finding that these subjects are very interesting, take those subjects. Okay, first create interest in that subject and then go with other subjects. Law होगा, audit होगा. If you are finding कि sir याद नहीं रह रहा है, and see recalling हो जाएगा. Write daily 3 questions for audit, alternatively for audit and law. 3 questions you have to do practice 15 to 20 minutes properly. Facts of the case, provision, conclusion. If you write it in daily at least 3 questions, you will find it's very simple at the end. ये ध्यान में रखना. 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 2 महीना लगातार करना ही है. लॉ में करना ही है. 2 hours if you are doing law, classes which are going on, suppose 6 to 7 hours classes are going on. After that 6 hours is your self study. Classes will make your study easy. ओके, तो क्लासेस ये नहीं होगा कि क्लासेस कर लिया मतलब नाउ आई एम हैप्पी कि मेरा सब हो गया. नो, क्लासेस सिर्फ आपको इजी करके देगा. कौन सा? नाउ यू ओनली सी प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड. ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं होता. एंड इफ यू वांट टू रीड इट फ्रॉम द स्टडी मैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट. नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड मींस व्हाट? लास्ट ईयर शेयर्स आर नॉट देयर एंड नाउ वी हैव दैट शेयर्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड. Post acquisition dividend, last year also we had that shares, current year also we are having that share. So this is called as post acquisition dividend. So that will be transferred to P&L. Pre acquisition dividend will be cost of investment. So recall this concept. Right shares, we can renounce it or sold it. Whenever there is a sale, we have Wayne's calculation, sales value as above, less cost of acquisition, whatever the cost, and same adjustment is there. Okay, new adjustment you mark it. New adjustment, wherever you are finding, you prepare your index. Index में only new adjustment will be recorded. A category, B category, C category. This is like how you have to revise. मैंने तो सब आपको परोस के दिया है भाई. मेरे सब्जेक्ट में पूरा का पूरा परोस के दिया है. आपको सिर्फ खाना है, वो भी नहीं खाते हो आप. And same thing I'm doing in the costing and FM. In income tax also you can follow same way because I'm not a teacher of income tax. तो कॉस्टिंग एफएम में सेम थिंग फॉलो करता हूं. जेड कैटेगरी मींस क्या? वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में बहुत सिंपल, एनीवन कैन डू इट. दैट इज कॉल्ड एज जेड कैटेगरी क्वेश्चंस. नितिन जी, ओके, चलिए. सो विल मूव टू कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स. अदरवाइज विल टेक अ ब्रेक. नहीं ठीक है, क्या मन भी नहीं बोला है? नहीं, एक डिबेंचर का प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम. सो आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ investment in debentures. Now how to solve this question? I will go with TYK question only. I will go with TYK question. Okay. See, what is the difference between debentures and shares calculation? In shares, dividend is not fixed. What is the problem? Dividend is not fixed. Now try to understand. Dividend is not fixed. Because if profit is there, then only you are going to declare dividend. But in case of debenture, interest is fixed. So now what are challenges? If interest is fixed, now this is your balance sheet, profit and loss account. Now whenever you are buying any debenture, for example, I will give you one example. Suppose debenture is also having face value, because interest is not calculated on investment value, it is always calculated on face value. Okay, interest and dividend are always calculated on face value. Your market price is different, your book value is different. Okay, your book value might be different, your market price might be different. Now try to understand this concept, how we are going to do this. Now we acquired debenture on first, so this is my year, 1st April to 31st March, 12 months ka period.
I acquired one debenture on 1st of, assume September. On 1st of September, April, May, June, July, August. Okay. So after 5 months, and these are 7 months. Now suppose in my example, see in accounting example, interest is always credited after 6 months. Okay. That company is giving you interest after 6 months. But in my example, I am giving you interest on 31st of March. Okay. Now I acquired this debenture at 108 rupees. 108 rupees. Assume interest rate is 12%. Assume interest rate is 12%. 12% means per annum. So 1% per month. Okay. So 1% means 1 rupee. So interest rupee 1 per month, because our face value is 100. On 112% interest means 1% per month. 1% per month means 1 rupee. Okay. Those zeros come here. 2 zeros we cancel. So 1 rupee. Now for 5 months it will be rupees 5. And now 7 months it will be rupees 7. Okay. Now this rupees 5, suppose I bought it, Sanket sir bought it from Mona ma'am. So Mona ma'am was the debenture holder from 1st April to 1st September. And after that, SS is owner of the, debenture, investor of the debenture. Okay. Now company is paying rupees 12 on 31st of March. Okay. Company will pay to whom? Not Mona ma'am, who is a last holder. So last holder को 12 rupees मिल जाएंगे. But actual 12 rupees is not of Sanket sir. Mona ma'am should get 5 rupees. Okay. So Mona ma'am will decide at the time of transaction. Now this 108 is excluding interest, because Mona ma'am knows the calculation. Mona ma'am knows that I should get 5 rupees because interest is fixed. And Sanket sir is going to get 12 rupees at the end. So Mona ma'am is already aware about this concept. Sanket sir is going to receive 12 rupees. So now Mona ma'am and Sanket sir will decide the price. Whether this 108 is excluding interest. If yes, Sanketa sir has to pay extra interest. So Sanket sir will pay total 113 amount. And this is called as cum-interest. See, X interest amount will be shown in the balance sheet of Sanket sir. And 5 rupees will be shown in the profit and loss account of the Sanket sir. So my P&L account and balance sheet will look like, my interest is my expenditure. I paid 5 rupees expenditure to Mona ma'am. My investment is showing at 108, but my cash balance will reduce by 113 rupees. And this is a concept of X interest and cum interest. So whenever I'm doing the calculation, see, the concept is very simple. Mona ma'am is selling that debenture on 1st of September. One more time. When Mona ma'am is selling, see, what are the concept which is given? Face value is given in the question, 100 rupees. Okay. Second one, interest rate is given in the question. Don't worry about interest rate. Interest date is also given in the question. And now what is not given in the question? That calculation part. What is the value of the investment and bifurcation? Only one debenture amount is given and you have to calculate investment value. But remember, now in exam, either cum interest is given or X interest is given. X interest is 108. So institute will give you 108 as the X interest. Then you have to understand, I have to pay 108 plus extra interest. Now Mona ma'am should get the interest of 5 months from 1st April to 1st September. What is the rate of interest? 12% per annum. And Sanket sir will get the interest from 1st September to 31st March. But actual life company is paying 12 rupees to Sanket sir. So it's responsibility of Sanket sir that 5 rupees he will pay to Mona ma'am when he will pay on the date of transaction, irrespective he is getting on 31st of March. Don't ask me sir present value calculation. No beta, इतना डिटेल में नहीं जाना है. So सामने वाले को 5 rupees दे देना है. किसको दे देना है? 5 rupees Mona ma'am को. Why? Because she hold the debenture from 1st April to 1st September. Now you have to ask yourself whether 108 is X interest or cum interest. If this is X interest, excluding interest, so you have to pay. Sanket sir will pay 108 plus interest amount, 5 rupees extra, and that is the cum interest amount 113. एक बार
शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, ये मोना मैम और संकेत सर के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। अभी डिवेंचर में कैसा होता है, डिवेंचर में एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू अभी वो इतना हिंदी में मत पूछना, दर्शनी भाग वगैरह ऐसा मुझे याद नहीं है अभी उतना। हाँ जी, तो ये फेस वैल्यू जो होता है ये 100 रुपीज है। इंटरेस्ट रेट कितना हुआ इसका, 12% इंटरेस्ट हुआ, तो ये 1% महीने का हुआ। 12% साल भर का मतलब 1% महीने का, तो 100 रुपए पे 1% बोले तो 1 रुपया। 1 रुपया। अभी ये डिबेंचर कब बेचा, डिबेंचर बेचा मोना मैम ने संकेत सर को 1 सितंबर को। तो मोना मैम की हकदार थी 5 महीने के इंटरेस्ट की। 4, 5, 6, 7, 8 5 महीने का इंटरेस्ट, अगस्त तक का इंटरेस्ट मोना मैम को मिलेगा। और सितंबर के बाद का इंटरेस्ट, सितंबर से इंटरेस्ट चालू होगा, वो संकेत सर को मिलेगा। दोनों होल्डर अलग अलग है। और इंटरेस्ट की अमाउंट फिक्स होने की वजह से ये पूरा 12 रुपया जो है वो कैसे डिवाइड होगा, तो 12 रुपए में से 5 रुपए जो है वो संकेत मोना मैम को मिलना चाहिए और 7 रुपया संकेत सर को। पर क्या होता है, कंपनी ऐसा एक एक को कहां देखती बैठेगी। कंपनी 31 मार्च को बोलेगी, ए भाई कौन है होल्डर, तो यहाँ पे कंपनी कौन होल्डर है, संकेत सर होल्डर है, तो पूरा का पूरा 12 रुपया संकेत सर को मिलेगा। ये तो जिम्मेदारी मिलती है संकेत सर की, बनती है कि संकेत सर ये 5 रुपए जो है ना वो उसको मोना मैम को दे दे। अभी मोना मैम और संकेत सर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन क्या होगा कि भाई ये पैसा, ये डिबेंचर कितने में खरीदना है, तो मोना मैम बोली मुझे 108 रुपए चाहिए, पर 108 रुपए मुझे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पैसा मैं अलग से लूंगी, इंटरेस्ट का पैसा मैं अलग से लूंगी। तो संकेत सर ने बोल दिया ठीक है भाई, तो तुझे कितना पे करना पड़ेगा। वो बोली देखो 108 रुपए तो मेरा एक्स इंटरेस्ट बनता है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, और 5 रुपए इंटरेस्ट का। तो संकेत सर को ये बाइफर्केशन बताना पड़ेगा। कैसे बाइफर्केशन बताना पड़ेगा, संकेत सर को क्वेश्चन में दोनों बाइफर्केट करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट कितना और एक्स इंटरेस्ट कितना। एक्स इंटरेस्ट अमाउंट जो होगी वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी संकेत सर के। तो संकेत सर के बैलेंस शीट में 108 रुपया मतलब एक्स इंटरेस्ट से हमेशा अमाउंट दिखेगी। और उन्होंने पे कितना किया, कैश बैलेंस उन्होंने पे किया 113, पर उसका इंटरेस्ट जो है वो 5 रुपया। देखो ये डेबिट है, ये खर्चा है, इन्वेस्टमेंट भी डेबिट है, और कैश गोज आउट हुआ क्रेडिट, कैश गोज आउट हुआ क्रेडिट। तो ये एंट्री आपकी समझ में आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट 108 जो एसेट में जाएगा, 5 रुपया जो है वो P&L में जाएगा, और संकेत सर के जेब से 113 रुपए जाएगा। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, हाउ टू रिकॉर्ड इट। सो इन्वेस्टमेंट हमेशा, अभी मोना मैम ऐसा भी बोल सकती है, मतलब मोना मैम बोलते रहे मुझे 113 रुपए पूरा फाइनल पेमेंट कर देना, तो संकेत सर को फिर भी बाइफरकेट करना पड़ेगा कि 113 का फाइनल पेमेंट मतलब क्या, 5 रुपए तो उसमें से इंटरेस्ट है भैया, 5 रुपए इंटरेस्ट है, और उसके बाद 108 रुपए है, तो संकेत सर को तो बाइफरकेशन करना ही पड़ेगा, भले एक्स इंटरेस्ट होगा या कम इंटरेस्ट। एग्जाम में वो लोग डायरेक्टली देंगे कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ नथिंग इज मेंशन ऑलवेज एज्यूम एक्स इंटरेस्ट, if nothing is given always assume x interest, and this is the concept of debenture. Remember, this is very simple. Debenture का इंटरेस्ट किसको मिलेगा, लास्ट होल्डर इज गोइंग टू रिसीव इट, बट ही हैज टू बाइफरकेट, ही हैज टू पे समवन, दैट इज मोना मैम को पे करना पड़ेगा ये 5 रुपीज, एंड 7 रुपीज जो होगा वो उसका हक रहेगा। तो उसके P&L में इनकम 7 रुपया बाद में दिखेगा। नाउ दिस इज हाउ यू विल शो यूर ये अकाउंट। नाउ हाउ टू प्रिपेयर इट, लॉजिक इज वेरी सिंपल। हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, डेट particulars. Now see, we have to calculate interest. We have to calculate interest, and therefore face value is very important. And interest is we are going to calculate, and this is column which is called as x interest. तो x interest we will show it in the balance sheet. Cost इसको बोलेंगे cost balance sheet में, और ये interest किधर जाएगा, तो interest will be recorded in the P&L. Now see how we are going to present it. Date, particulars, again face value, interest column. Why we open face value column? Because logic is very simple, because you have to calculate interest. When Sanket sir bought this 1st September, we are recording it. Okay, we are recording it. बेटा 108 हमने डिसाइड किया था तांबेश्वरी, क्या क्वेश्चन है ये। मोना मैम को 113 रुपया मिलेगा, हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है, हमने डिसाइड किया था कि हम लोग एक दूसरे को 108 रुपया पे करेंगे इंटरेस्ट छोड़ के, और 5 रुपए इंटरेस्ट का। मोना मैम को क्यों नहीं मिलेगा, मतलब मोना मैम को मिलेगा ही ना, हमने डिसाइड किया। मार्केट में जाके आप परचेस करके ला रहे हो, मुझे चाहिए वो डिबेंचर। सो टू बैंक, now why we calculated face value 100 rupees to calculate interest, so 100 rupees into 12%, मोना मैम को कितने महीने का इंटरेस्ट हमने दिया, 5 months, so 5 rupees. This is A column, this is B column. Okay, we will calculate interest. Now in exam either x interest is given, यदि x interest दिया होगा तो 108 डायरेक्टली given, एंड कम इंटरेस्ट दिया होगा तो आपको क्या करना है, 113 -5 ऐसा लिखना है इनर साइड पे, सी कॉलम। सी कॉलम पे वी विल राइट आइदर 108, इफ एक्स इंटरेस्ट इज गिवन डोंट डिडक्ट इंटरेस्ट, इफ कम इंटरेस्ट इज गिवन डिडक्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो 113 वो लोग देंगे, आपको 5 माइनस करना है। एंड व्हाट इज द प्राइस यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओवर हियर इन डी कॉलम, ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट 108, 108 इधर से इधर उठाया, so C column always inner side. So A column में आप क्या लिखोगे, face value. B column में you are going to write interest. C column में you are going to write in the inner column. Okay, X interest होगा तो don't deduct interest, कम interest होगा तो deduct interest. And then
On 31st of March, I will record by bank, I got the interest. Don't write in face value. Don't write it in cost column. I got 12 rupees interest from company. So now I will close the books. I will close the books. So buy balance carried down. What is the face value? 100 and 108 is the buy balance carried down, the investment value that is carried to investment account. And see, interest column I will transfer to P&L. 12 rupees credit, 5 rupees debit. I am getting 7 rupees. Yes, 7 rupees is a profit and loss account. And therefore, we need this format. Okay. This format will definitely save your time. And this is how, जैसे shares में हमने देखा था, columns are date particulars, number of shares and rupees column. Here we are going to prepare date particulars, face value, interest, cost, date particulars, face value, interest, cost. And this is how we are going to prepare all these columns. Okay, any doubt, any shock, any सवाल, तो raise your hand and ask me the question. Okay, so come into X interest पे हमेशा दिखाना है. Yes, when we will solve problems, your concepts will get more clear. So एक ही चीज ध्यान में रखना है कि we have to calculate interest on due date. And whenever we are doing transaction, we have to calculate interest, and that price we have to see whether it's a cum interest price or X interest price. And whenever we will solve the problem, we have to prepare in face value column. A पे लिखेंगे face value of that share, B में लिखेंगे interest calculation, C inner column if it is X interest, then we will not deduct interest. If it is cum interest, we are going to deduct the interest. And D column में we are going to write cost. Okay, so ये bifurcation करना जरूरी है, तो आंसर करेक्ट आएगा. फेस वैल्यू कॉलम इज ओनली फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन. इंटरेस्ट कॉलम P&L में जाएगा. कॉस्ट कॉलम बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एनी इन्वेस्टर. ओके, डाउट, शक, सवाल? यस, अनिरुद्ध जी. यस, अनिरुद्ध बेटा, 10 मिनट में आप लोग एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट समझ गए बेटा? हाँ नो जी, डाउट बोलिए. सर, नो नो डाउट. डाउट सर. तन्नू जी को डाउट है. तन्नू जी बोलिए. यस बेटा, तन्नू बोलो. इंटरेस्ट को क्यों, मतलब मैम को क्यों, मतलब पेड़ में तो ऐसा नहीं होता था, बट इंटरेस्ट, क्या क्या क्या? सर इंटरेस्ट को हम लोग मतलब प्रीवियस होल्डर को क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि और इंटरेस्ट ऐसे अमाउंट फिक्स है शेयर ना में बेटा. तो हम लोग ने इंटरेस्ट की अमाउंट फिक्स है, तो मेरा हक कितना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरा हक कितने महीने का बनता है? मैं तो 7 महीने का इनकम बताऊंगा, और मैम 5 महीने का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा. तो हमारे ट्रांजैक्शन ऐसे ही करने पड़ेंगे कि भाई हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो हमें इंटरेस्ट के टूवर्ड्स भी पेमेंट फिक्स है ना. मैं तो सिर्फ 7 महीने का इंटरेस्ट बता सकता हूँ, मैं पूरा इंटरेस्ट बता ही नहीं सकता हूँ. तो मुझे बाइफर्केशन तो करना ही पड़ेगा कि उनको कितना इंटरेस्ट दिया और कितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया, वो तो देना ही पड़ेगा बेटा. तन्नू, समझ में आया? ओके. हाँ, तो ये तो बाइफर्केशन देना ही पड़ेगा ना इंटरेस्ट, क्योंकि मैं तो इनकम सिर्फ 7 ही बता सकता एंड हूँ. अगर कम इंटरेस्ट होगा, कम इंटरेस्ट होगा तो आपको 113 सर प्राइस देना अगर पड़ेगा. सपोज इफ कम इंटरेस्ट भी 108 है अभी. मतलब कम इंटरेस्ट होगा तो हम लोग को उसमें से लेस करना पड़ेगा, और यस, इंटरेस्ट होगा तो हम लोग को उसमें से लेस डायरेक्ट वो नहीं अमाउंट करना लेना पड़ेगा, है. है ना यस सर? यस, डायरेक्टली फिर यस एक्स सर, इंटरेस्ट क्लियर अमाउंट हो आपको गया. इधर लेनी है 108, और कम इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट को माइनस करके वो अमाउंट आपको वहां पे लेनी है कॉस्ट कॉलम में. यस, यू आर करेक्ट. यस. वेरी गुड. रोजालिन जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. हाँ, बोलिए. सर एक्चुअली यही डाउट था, भी कम इंटरेस्ट और एक्स कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा. कम इंटरेस्ट होगा तो आपको इंटरेस्ट को माइनस करना है. एक्स इंटरेस्ट होगा तो आपको इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना है, डायरेक्टली वो अमाउंट कॉस्ट कॉलम में लिख देनी है. और इंटरेस्ट फिर भी कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट P&L में जाएगा, बैंक बैलेंस दोनों अमाउंट मिलकर नीचे जाएगा. ओके, कम इंटरेस्ट होगा तो डायरेक्टली उतना अमाउंट नीचे जाएगा 113, और एक्स इंटरेस्ट दिया होगा तो 108 टूवर्ड्स ये 5 रुपए टूवर्ड्स इंटरेस्ट, पर बाइफर्केशन करना ही पड़ता है. तो आप कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो अकाउंटिंग वैसे ही होगा, इधर एक कम इंटरेस्ट दिया जाएगा या एक्स इंटरेस्ट दिया जाएगा, पर बाइफर्केशन तो होगा ही होगा. ओके, यस सर, यस सर, इजी है. यस सर. पूरा प्रैक्टिकल सर करेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा. अरे ये सिंपल ही है आपको. अरे एग्जाम में इधर 113 दिया जाएगा या 108 दिया जाएगा, फिर भी बाइफर्केशन तो वही रहने वाला है, 5 और 108. सर आया समझ में? पर सिर्फ क्वेश्चन कैसे बदला जाएगा, मुड़ेगा तो इधर कम इंटरेस्ट दिए जाएंगे प्रॉब्लम में, नहीं तो एक्स इंटरेस्ट. पर
कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो 5 और 108 ही ब्रेकअप है, और तुम्हारे जेब से 113 ही जाने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया। यस, ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बट नाउ इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। हाँ जी, हार्दिक भाई बोल दीजिए, नहीं तो ब्रेक लेने दीजिए भाई, 2 घंटे से बोल रहा हूँ मैं सर कंटिन्यूअसली। सर हाँ बोलिए, छोटा सा ही डाउट है बोलिए सर। बोलिए। यूजुअली सर अगर हम कंपनीज को देखें तो वो सर इंटरेस्ट जो है वो तो हाफ ईयरली देते हैं। देंगे ना, हमें देखेंगे ना बेटा, ऐसा नहीं होता है। अ- अभी ये डिपेंड करता है, आपको एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन में, हाफ ईयरली ही। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक ये है ठीक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन था, ऐसे अभी हम लोग तो सॉल्व करेंगे अभी ठीक है क्वेश्चंस। सर। ठीक है, चलिए। यस, साई किरण। हाँ जी, साई किरण जी, Sir, लास्ट if it क्वेश्चन। was sir, if it was sold for 108 for X interest, it will be 103 plus 5, na sir? नो नो नो, if x interest directly 108 we will write. If 108 is a cum interest, then it will be 5 rupees and 103 plus 5. 103. Ah, okay, okay, okay. Okay. If x interest 108 directly we'll write. If cum interest 108, then 5 and 103 will be the bifurcation. Okay, sir. Okay. ठीक है, we'll take a break. And after break, beta, we are going to solve one question. And then S10, if time permits, I will take S10 also. Okay, so 10 number and 11 number and 12 number, you will do it the homework and we'll discuss it in the next session. In break, you can do this question. Okay, 12, 11 number. Those students, after 5 minutes, you can solve this question and I will take it after break. Chalo. So take a break. Thank you. Yes, जल्दी से आ जाइए. We are meeting at 9:05. ओके, 9:10 को मिलते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। 9:10 को हम लोग मिलेंगे एग्जैक्टली 20 मिनट के बाद, तो 5 मिनट आपको ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। आयास ब्रेक ले लीजिए।
चलो yes, I will solve one more question. 11 number. Yes. How to solve TYK 11? The following information is presented by Mr. Z relating to holding 9% central government bonds. Beta, write down. First, see in exam, you have to write investment account, scripts, books of face value, interest, cost, date, particulars, face value, interest, cost. Date, particulars, face value, interest, cost. ठीक है, चलिए ड्रॉन. सी ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 and interest dates are 30th September and 31st March. But he closes books on 31st December. Now here is very important point. Balance sheet date 31st December is not equal to interest receipt date. March, and therefore interest receivable for 3 months. See, this September, matlab last interest you paid on 30th September. So October, November, December, 3 months interest is outstanding. 3 months interest is outstanding, and we are follower of accrual concept, and therefore we will record 3 months interest. Okay, so likhiye. First
January, two 2001. Two balance brought down, 1,20,000 and 1,18,000 cost. And red pen, two interest receivable, 1,20,000 into 9%, last interest paid on September to October to December, 3 months. $2,700. This is very important adjustment. That last interest is paid on September, so 3 months ka interest is receivable, and therefore entry will be interest account debit to interest receivable on 1st Jan, and on 31st Jan reverse the means actual entry on 31st March or 31st December. The entry will be interest receivable is my asset to interest, and on 1st Jan we will reverse this entry. We will reverse this entry. Okay, so interest account debit to interest receivable. Any difficulty? No. ठीक है, 2 पेजेस पे ले सकते हो. Yes, वैष्णवी जी, you can take it on 2 pages. Yes, beta. If you cannot complete it on 1 page, you can take it on 2 pages. 1st March, purchase 200 units. Write down. After one line, to bank. What is the sequence? What is the sequence? $200 into 100. Face value is 100. 20,000. When you acquire 1st March, when you paid last interest, September, October, November, December, January, February. So you are going to pay interest to previous holder for 5 months. 20,000 into 9% into 3 by 12. 450. 450. And this is X interest 98. So 200 into 98. Don't deduct interest. 19,600. First March. Then 31st March 2001, by bank on 1,40,000. Don't write it in face value column and cost column. Whenever interest is you are receiving, don't write it in face value. When you are buying and selling, then only write it in face value column. Otherwise, don't write. 1,40,000. 9%. When last interest is paid? Last interest is paid on September. So 6 months. Now you will receive 6,300. You will receive 6,300. Oh, sorry. It's 5 months, huh, beta? It's 5 months. $750. Change it. Okay, sorry, it's my mistake. 5 months. Yes, beta.
5 months. It's my mistake. I have written 3 months. It should be 5 months. March means last interest is paid for 5 months. Yes, Adishri. Over. Now 1st July. 1st July. By bank. By bank. And you are asking FIFO method. Huh? So by bank, you sold 500 units. Means 50,000. 50,000. Now 50,000 into 9%. For how many months? Last interest you paid on 31st of March. Last interest 31st March. April, May, June, 3 months. April, May, June, 3 months. $500 into 100 X interest. X interest. 50,000. 50,000. $50,000 is X interest. Okay. Whenever there is a sales, after half page, write down profit oblique loss on sale. What is the sale date? 1st July. 1st July. Serial number, particulars, computation, rupees. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1. Sales value as above. 50,000. $50,000 and see FIFO method. Now you sold this 50,000 out of first lot. Out of first lot. Now first lot, cost of acquisition. This is not when. Debentures में you sold it for first lot. So 1,18,000 divide by 1,20,000 into 50,000 you sold. This is called as first in, first out. If wanes, if weighted average number better, we will consider this calculation, both. Okay, 1,20,000 and got the concept? But this is the first lot and therefore first in, first out, we will consider 49,167. So what is my profit? My profit will be 1 minus 2, 833. And I will record the profit on 2 profit on sale. Eight, three, three. Chalo.
Now on 1st October, sorry, before 1st October, there is 30th September. Now on 30th September, we will again receive interest by bank. On how many months, beta? 6 months. This is for October to March. And this is from April to September. April to September. Now interest is 1,20,000 plus 20,000 minus 50,000. So 140 minus 50. So you left with 90,000, 9% for 6 months. But this problem calculations are more. Therefore, students are normally get confused. 4050 and there is no purchase and sale. So don't write it in face value column and isme cost column. Simple. Now again, purchase 150 units, cum interest 1st October. Okay. So 1st October to bank. How much? 150 units means 15,000. Zero interest. Why interest zero? Because we paid it in September only, last day. So 1 day ka interest don't calculate it. One don't calculate, month wise calculation. 150 into 98 and cum interest, therefore interest is zero. We deducted that. So your answer is 14,700. 14,700. This 1st October. And then you sold on 1st November again by bank. You sold 300 units, 30,000. Interest is 30,000 on 1st November. Matlab, September you completed. Only 1 month interest. Only 1 month interest. 9% because last interest is paid on September 30. तो अक्टूबर का मिलेगा 225. 300 units into 99 x interest. So don't deduct interest. 29,700. 225 आया? Yes. 225 interest. Very good, Anirudh. 225. Now, working note 2. Working note 2. Profit or loss on sale 1st November. But if you do proper practice, it will be easy for you. Roman 1. Don't write now again. Same format we will continue. Sales value as above. As above, it is 29,700. And see, cost of acquisition. See, first in, first out. So out of 1,20,000, you already sold 50,000. So you left with 70,000. And out of that, you sold 30,000. So it is from first lot only. It is from first lot only. 1,18,000 divided by 1,20,000 into 30,000. You are selling it from the first lot. 29,500. So you are in 499 means 500. Profit 200. And on the same line, I am going to record profit. To profit 200 rupees. I will record to profit on sale. Then
31 December 1, by balance carried down, and more important, by interest receivable of 3 months. 9% into 3 by 12. So now you left with 140 plus 15 minus 50 minus 30. So you left with 75,000. So by balance carried down is 75,000 1688 is the interest receivable, and your cost 1,18,000 plus 19,600 plus 833 plus 14,700 plus 200 153 333 153 333 minus 29,700 50,000 73 633. $155 1,55,000, and interest we will transfer it to P&L. So interest ka total 6,300 plus 1,125 plus 1,688 13,388 minus 9,938. Yes. And this is how you have to present your answer. I know thoda sa complicated hai, but students, please keep patience. Yes, this is how you have to present your answer. Chalo, now it's time to take your difficulties. So in exam, how to solve it, you understood? Do practice. I know it's first time it's very difficult. तो लास्ट का 20 मिनट का लेक्चर वापस देख लो. देखो कुछ भी नहीं है. विल डू द क्विक रिवीजन इन एग्जाम. व्हाट यू हैव टू डू. तो एक बार देखो, हिंदी में बता देता हूं आपको. देखो बेटा, आपको एग्जाम में क्या करना है. आपको एग्जाम में सबसे पहले तो देखना है बैलेंस शीट डेट और इंटरेस्ट का डेट सेम है क्या. नहीं है तो बेटा ओपनिंग रिसीवेबल आएगा. तो सबसे पहले हमें 1 जनवरी को ही ओपनिंग रिसीवेबल ये लिखना है. एग्जाम में ऐसा डेट्स लिख लेना. सो ओपनिंग रिसीवेबल कितना, 1,20,000 के ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, ये पहले लिख लेना है 1 जनवरी. ये ओपनिंग रिसीवेबल इंटरेस्ट याद रखना. फिर 1 मार्च, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, 31 मार्च का एक डेट आएगा. फिर 1 जुलाई का रिकॉर्ड करना है. फिर 30 सितंबर रिकॉर्ड करना है इधर. फिर 1 अक्टूबर, 1 11. अभी देखो 1 मार्च बोले तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था, सितंबर में. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पे 5 महीना लिखना है. 5 मंथ्स. इधर 6 मंथ्स. 1 जुलाई 31 मार्च को पे हुआ. अप्रैल, मई, जून 3 महीना. 30 सितंबर 6 महीना. 0 एंड इधर 1. इस तरीके से आपने कैलकुलेशन लिखा. एंड देन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीवेबल 3 मंथ्स. बेटा ये किया ना, लाइफ में कभी भी डिफिकल्टीज नहीं होएगा. ये ध्यान में रखना. ये जो करेगा उसको कभी लाइफ में डिफिकल्टी नहीं होएगा. इतना ध्यान में रखना. और ये यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल. ओके, सो इस तरीके से कैलकुलेशन करो. ठीक है, चलो. सो क्वेश्चंस. यस रोजालिन जी, डू यू हैव एनी. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. सॉरी. हाँ, No, sir, no question. नो क्वेश्चन. ठीक है. भावना. Yes, sir. Sir, I have a doubt regarding X interest and cum interest. यस बेटा, व्हाट इज द डाउट. क्या डाउट है आपका. सर, इसमें कब ऐड करते हैं इंटरेस्ट और कब नहीं लेते हैं. बेटा एक्स इंटरेस्ट होता है ना, एक्स इंटरेस्ट
तो आप देखो मैंने किधर भी कैलकुलेशन में इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया। आप इंटरेस्ट तो निकाल लोगे, इंटरेस्ट तो यस सर। निकाल दोगे ना। और एक्स इंटरेस्ट यस रहेगा तो सर। बेटा ये जो है ना, ये इनर कॉलम में जो हम लोग लिखते हैं ना, इसमें से इंटरेस्ट माइनस मत करना। और कम इंटरेस्ट होता तो आपने 750 माइनस करके यहां पे अमाउंट लिखी देती कॉस्ट कॉलम में, समझा? यस सर। क्वेश्चन में दिया रहता है एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करना एंड ब्रोकरेज ऐड कर देना बेटा, ब्रोकरेज ऐड कर देना इन केस ऑफ परचेस एंड इन केस ऑफ सेल ब्रोकरेज को माइनस करना। तो ब्रोकरेज इज इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में। हाँ जी, समझा भावना बेटा? यस सर। हाँ, कुछ नहीं, आप एक बार वापस सॉल्व करो, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके सर। सर जैसे आगे फर्दर अक्टूबर का नवंबर का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट जो लेंगे हम वो स्टार्टिंग से लेंगे ना? लास्ट इंटरेस्ट डेट से। लास्ट इंटरेस्ट कब ला, पे किया था? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर में 30 सितंबर से इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा ना। ओके ठीक सर। है। हाँ। यस। यस। हार्दिक। सर ये जो एंड वाला सेल है, अगर ये फर्स्ट 1/11/2000 एंड X1, अगर ये X की जगह कम इंटरेस्ट होता तो इसमें एक महीने का इंटरेस्ट मैं माइनस करके उसको देता ना। यस यस यस। ठीक है ना सर? हाँ हाँ बेटा, इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट का कुछ मत कीजिए, कम हाँ इंटरेस्ट होगा तो माइनस। ब्रोकरेज जैसा ये नहीं करना है, ऐड कर देना है, ऐसा उल्टा नहीं करना है। हाँ जी इधर सर। भी लेस ही करना है। मुझे समझा आपको क्या क्वेरी था। और सर अगर बाय चांस इसमें अगर ब्रोकरेज भी दिया होता कि सेल के वक्त करेंगे तो ब्रोकरेज को हटाकर इंटरेस्ट को माइनस करना है। हाँ जी, 1% को माइनस करके बाकी इंटरेस्ट माइनस करना मतलब इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा, है। ब्रोकरेज उसमें इंक्लूड नहीं होगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ब्रोकरेज को जैसे कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट ब्रोकरेज उसी में से माइनस किया है। तो वो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा एक्स इंटरेस्ट, तो एक्स इंटरेस्ट पे ब्रोकरेज पूरे अमाउंट पे लगेगा। फिर वो एक्स इंटरेस्ट पे भी लग सकता है, कम इंटरेस्ट पे भी लग सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है तो प्लस, हाँ जी वो सर। आपको एकदम सिंपल रखना है, +1% या -1%, डायरेक्टली जो भी अमाउंट होगा ठीक उसमें से। ठीक है पर सर। मुझे पूछेगा तो एक्स इंटरेस्ट पे ही लगना चाहिए ब्रोकरेज। ठीक है सर। यस। पूजा। सर जो आपने कैलकुलेशन की है क्वेश्चन के बीच में, क्या वो हम पेपर में भी वैसे कर सकते हैं कर या? सकते, सेम 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 जो मैंने किया है वही करना है। स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो इसका। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं पेपर में भी? हाँ हाँ, ऐसे ही कैलकुलेशन। ये तो साइड में एक एक महीना लिख लेने का ना, ऐसा इस तरीके से ना, पेंसिल से कर देना बेटा ये। नहीं सर, मैं एग्जाम में पूछ रही थी कि जैसे आपने यहाँ पे बीच में लिखा हुआ 120 इंटू मतलब यस इंटरेस्ट यस कैलकुलेट। यस। हाँ हाँ। ये नहीं तो आपको बहुत बड़ी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। बनानी है क्या वर्किंग नोट आपको? नो सर, उसमें टाइम जाएगा। हाँ, तो ये इजी है ना, यस सर। तो इसी को फॉलो कीजिए। एंड दीज आर 2 वर्किंग नोट जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन कोई किसका है? पूजा थैंक यू। हो गया, रितिका। रितिका। नो। सर बोलिए। आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन पार्ट। सर कॉपी को लैंडस्केप करके लिख सकते हैं क्या? लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में भी लिख सकते सर? 2 पेजेस पे लिखा तो अच्छा होगा, सामने सामने के, सिर्फ स्टेपल बराबर कीजिए, थोड़ा मार्जिन छोड़ देना। ओके सर, थैंक यू। यस। थैंक यू। तनु जी। हाँ तनु। सर मतलब जब अगर ब्रोकरेज निकालना रहेगा तो वो हम लोग फेस वैल्यू पे लेंगे या फिर परचेज वैल्यू जो है उससे करेंगे? ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट में एडलेस करना है। नो सर, मतलब कि हम लोग फेस वैल्यू लेंगे या फिर कॉस्ट पे ब्रोकरेज को कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, कैलकुलेट ब्रोकरेज इज करेंगे? ऑलवेज पेड ऑन कॉस्ट। ओके सर। यस, ब्रोकरेज आपकी लैंड वैल्यू पे डिसाइड होती है ना ब्रोकरेज, नॉट की रजिस्ट्रेशन वैल्यू कितनी है। यस सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो ठीक है, इट्स 9:40, सो वी विल वाइंड अप द सेशन। सो आज हमने ब्रोकरेज भी पढ़ लिया, एस 13। आई डोंट थिंक नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो एस 13 कीजिए। आई नीड वन मोर, एक्चुअली मुझे नया स्टैंडर्ड चालू करना था नेक्स्ट इसमें। ठीक है, एक थोड़ा सा एस 10 देख लेंगे और एक क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में, विल स्टार्ट विद द फ्रेश स्टैंडर्ड। सो नेक्स्ट सेशन एस 16 इन द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ वी विल कंप्लीट अवर बैकलॉग। ओके।
और डू प्रैक्टिस हम लोग कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।